आफ्टरनून वेलकम टू आडा 24/7 ओडिया। तो आज तो आमर 15तम ओएसटीटी एग्जाम रो 2026 पाई क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। यस तुमे माने वेट करके अच्छो मु मधे ईगरली वेट करके अछि तुमे मानकर प्रेजेंस आसिले आमे कोन करबा ना क्लास को केमिति जल्दी जल्दी स्टार्ट करबा बोलिका। ओके हाँ प्रणाम गुड आफ्टरनून समस्त को। तो समस्ते फुल जोश रे आसी जाओ। मु कहीं एते दिन भितर ए जोश रे देखि पारुनी कि तम मानक भितर जोश अछि बोली। ओएसटीटी एग्जाम दबो तो से सेप्टेम्बर 30 हो किंबा घुंची घुंची केते हबो अक्टोबर 5 हो अक्टोबर 10 हो अक्टोबर 20 हो दबार अछि तो तामाने कोन आमे भाबुथवा हाँ घुंची घुंची जीवो आउ जेमति कि पद्मा घुंची घुंची जाउची आउ आमे पोखरी भितर को पहरी पहरी पद्मा को धरिया को जाउछे सेमिति घुंची 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 आम जीवन भी अंधार रे अंधकारमय हे जिबा आमे सेमिति घुंचुथुबा। ओके तो ठीक अच्छे समस्ते जल्दी जल्दी टिके जॉइन हो जाओ समस्ते सांगसाथी मान को शेयर कर दियो। आमे हमर सेशन स्टार्ट करबा जम्मा भी डिले करनी जम्मा भी ठकामी करनी। मोर कहबार कारण एटलिस्ट पाठ तो पढु था पाठ कोठी गोटे काम दब कहीं बर्तमान रिक्रुटमेंट भी तुम आसुनी जो थे कि तुम मैंने डिमोटिवेट हो जाउछ। ए रिक्रुटमेंट प्रोसेस केबे आसीबो सेटा भी आमे जानिनी आमको कुआ जाउछ कि ऑलरेडी रिक्रुटमेंट प्रोसेस दिया सरलानी ता माने आमे होछ मूर्ख अशिक्षित। ऑब्वियसली आमे मूर्ख अशिक्षित निहाती भाबरे आमे समस्त मूर्ख अशिक्षित गध एटा आमे भी जानिछे कि 5000 पोस्ट देले भी 5 लाख पिलांकर रिक्रुटमेंट रो स्वप्नटा पूरा हबनी किंतु आमे एटा जानू जो 5000 पिला पाठ पढुछंदी सेई 5000 पाइबे आमे जदि पाठ पढनु ताले आमे फेल हबु किंतु एटा हमकु सिलट खड़ी धरिके प्रथम रु पुणी थरे सिखा जाउची। तेणु तुमे माने पाठ पढु थाओ पाठ पढ़ी के आगु को माडू था जेते बेले आसीबो सेते बेले धापे की गोटे धरिबो आउ तुम मानक पिला माने से सिस्टम नाही कि गिनारे जेमिति मा छतु आनी कि धन लो खाई दे बाबा लो खाई दे आउ मा लो खाई दे आउ के खाई देबा को कहबेनी सळा तू खा कि मोर हमर कोन जाईची आमे टंकार गदी रे सोइले दैट्स द बेटर उपाय हला। खाली प्रोसेस चलिनी सेटा कथाटा है कि तू मर कि तू बंच तू जाऊन दादन खटिबू गोटे रिप्लाई आसी तुम मैंने ओसीएस ओपीएससी प्रिपेयर होना आ ताले बीएड कॉलेज खोलुची कम पाई तुम माने इन फ्यूचर जदि ना आसे सेटा पचारिबो कि बीएड कॉलेज खोलुची कम पाई बीएड कॉलेज रे पिला माने पाठ पढुछंती कोन पाई काहे कि बीएड करिवु जदि गोटे बीएड छुआ ओपीएससी ऑफिसर हे परिबो जने ओपीएससी ऑफिसर आसी स्कूल ले भी पढ़ाई परिबे हमर जो माने आईएएस पाउछंती 15 दिन आमे स्कूल ले पढ़ाइबा 15 दिन आमे आसीबा एई काम करिबा। एक्चुअली पिला माने दोस्तों कहा को नुहे दोस्तों मु गालुआमी को दोउची मु कोन सेठी कहा ना रे ये खराब सी भलो कोनी किंतु ए जो गोटे स्टेडी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस चली छी ए स्टेडी प्रोसेस गोटे जिंस देख हमर हे गला हम ओडिसा गवर्नमेंट द्वारा एबे मेंशन हे जी कि 42 वर्ष जाए तुम माने चाकरी करि परिबो किंतु तुमरो से 42 वर्ष जा कोठी के काम को तुमरो से 42 वर्षटा तुमरो 42 वर्षटा होची कोन ना तुम धर 50 वर्ष रे भी चाकरी कल तुम एक्सटेंड कर देला 52 वर्ष जाए तुम केते वर्ष चाकरी क्षमता पाइबो ना 8 वर्ष हो 60 रे तो तुमको रिटायर्ड हबार अछि। द्वितीय कथा 52 वर्ष जाए कोन तुम किछि न करके तुम घरे थाली धर के बसथिबो ना को लाइब्रेरी रे बस की प्रिपेयर होथबो कि हाँ मते 52 वर्ष हैला जाए मोर टाइम अछि मु लाइब्रेरी रे पढिबी ना तुमको 52 वर्ष हैला जाए तुम बापा मां बंची थिबे तुमको एमती पैसा दे की कहिया नाही। तो से जिनसटा होची तेणु पाठ पढ़ु था बर्तमान जो भाया सिचुएशन हेलानी जॉब केबे बाहरिबो आमे धान चाष करबा ना बिलरे काम करबा ना कौन करबा आम भविष्य तो कौन आम भविष्य तो आम हाथ रे भी नाही आ मु भाबुची कि आमे समस्ते जीए जीए भी बीएड करिछु जने जने मूर्ख बीएड करि देछु काहे कि ना सेते बेले जो सिस्टम थिला आमे देखुथिले बीएड कर देले चाकरीटा खाली थुआ हे जाउची आमे सेया भाबिले तो से जिनसटा होची कोन ना तुमे माने गोटे स्ट्रांग प्रिपरेशन करो जहाँ भी पढुचो पिला माने
ओएसटीटी पढ़, ओटीईटी पढ़, एसएसबी टीजीटी पढ़, कहीं जूनियर टीचर था पेडागोजी क्लास देखु था, कहीं कौन भी क्लास देखु था, मोर काइंडली रिक्वेस्ट तुम मैंने कंस्टांट परिश्रम कर पाठ पढ़ी चल कहीं ना कौ समय चाकरीटा तुम अच्छी ये 5 वर्ष भितर किसी रिक्रुटमेंट बाहर ना 5 वर्ष भितर अधा जन डिप्रेशन को पलैबे ना ये 5 वर्ष पर आउ कौन हो जिनसा ये मैम ये जानी कि तुम्हें मैंने कहीं जान तेणु तुम्हें मैंने गोटे प्रॉपर प्रिपरेशन सहित पूरा स्ट्रांग प्रिपरेशन कर जेबे जहाँ होची देखा जिबा आमे जेते चिल्लेइले भी आम भॉइस कहीं भी शुणिबेनी केवल आमर पेन एंड पेपर लिखा जाए इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री किंतु एटा होची आमर पुलिस लाठीमाड़र कंट्री जदि आमे भॉइस दबा आमको पुलिस लाठीमाड़ करा जिवो आमे लाठीमाड़ खाइबा दांत पुंजी भांगिबा न सुंदरिया मुहटा को असुंदरिया मांकेड़ा मुहटे करवा ना हाथटे भांगिब जे सही हाथ भी आ परीक्षा जीवन सारा के दे पारबनी ना गोड़टे बांधिकी घरे बसब तेणु समस्त को गोटे आडभाइस जी भी भिडटा मोर जो भी जो जगार भी देखुंट कन्स्टांटली परिश्रम करंतु निजर परिश्रम फल केबे तो आसो से केबेटा आमे जानिने किंतु आमको परिश्रम करिया पड़िबो आमे जदि भाबिबा हाँ आसुनी आमे पढ़िबानी हाँ काहेंकी पढ़िबी ताहाले जदि आसिला हरी आमे से जगह कौन करबा ओके ठीक अछि आ बेसी किछि डिस्कशन करिबिनी ऑलरेडी 5 मिनिट बहुत ज्ञान दे देलिनी तुमको आज फर्स्ट क्वेश्चन Which of the following is an important characteristics commonly found in effective school administration at the primary level? तो इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोटा मास्टरी ओवर सब्जेक्ट नॉलेज रे जने टीचर का मास्टरी थिबा दरकार ओके तापर आसला लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो एई क्वेश्चन ता पिला माने हमर कोठो आसी छै ना स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रो आसी छै ओके एसबीएम रु आसी छे स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट आमे जो कहूछे स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट करूछे सी पचाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली फाउंड इन इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एट द प्राइमरी लेवल अच्छा बाबा रे तमनु एबे कहिलेनी कोठी आसी स्टिल तुमको लागुची ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हबो स्टिल सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से पचारि छु पुनी प्राइमरी लेवल राइट आंसर कौन ना लीडरशिप एंड मैनेजमेंट केमिति आमे इफेक्टिवली गोटे कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट करिबा केमिति टीचिंग लर्निंग रो मैनेज करिबा केमिति सब जिनसर डेवलपमेंट करि परिबा सेही ऊपर आमे फोकस करिबा से ता ऊपर ही फोकस करि थाए ओके आमे कहिबा एटा लीडरशिप आ मैनेजमेंट इंपोर्टेंट रोल प्ले करि थाए Which of the following is an important characteristic commonly found in effective school administration? गोटे proper leadership आ गोटे proper management ही हमर कौन करि परिबा ना प्राइमरी हो सेकेंडरी हो गोटे effective classroom management गठन करि परिबा द्वितीय क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चम्स्की humans have a dash to develop language perceptual set telegraphic readiness learning set biological predisposition कोटा कहि छथि से डी वेरी गुड बायोलॉजिकल तो से कौन कहिछन हमर यूनिवर्सल ग्रामर चम्स्की कौन कहिछंती ना हमर यूनिवर्सल ग्रामर आउ कौन कहिछंती लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कथा तो से कौन कहिछंती एटा गोटे छुआ पाखरे इनेट एबिलिटीज ऑलरेडी भरपूर हे की थाए एमती नुह के गोटे छुआ लैंग्वेज कहबा एक्वायर करि थे समस्त पाखरे इनेट एबिलिटी थाए बट सोशल इंटरेक्शन फल रे कौन हे थे से ता लैंग्वेज टा को इंटरनलाइज करि थे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से जो यूनिवर्सल ग्रामर रूल कथा कौन कहै छै एठी यूनिवर्सल ग्रामर रूल एठी जो कहै छै यूनिवर्सल ग्रामर माने कोन आमे जे कोनोसी भी ग्रामर सिखुचे जेमते कि आमे कहि परबा ओडिया हो हिंदी हो बांग्ला हो जहार भी हो ग्रामर प्रोसीजर आ पैटर्न टिके समस्तंगर समान थाए समस्तंगर इक्वल थाए ओके यस फादर ऑफ लिंग्विस्टिक ता सहित लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस गोटे छुआ भितर किछि ना किछि इनहेरेंट कैपेसिटीज थाए एंड सी तार सोसाइटी रु आसिले धीरे धीरे सोशल एनवायरनमेंट रे आवश्यकता अनुसार से लैंग्वेज एक्वायर करि थाए
Next asla, according to V.F. Skinner, language development in children take place as an outcome of inborn capacity, training in grammar, imitation and reinforcement na maturity. कोटा हबा? Very good. Imitation and reinforcement. Next है in a learner centric approach a teacher should गोटे learner centric approach आमर अछि teacher centric learner centric learning centric गोटे learning centric approach है teacher केमिति हबा दरकार clarify concept by citing examples facilitate students learning ना explain concept by using adequate support materials demonstrate inside the classroom कौन हबा Option C हवा explain concept by using adequate support materials clarify concept by citing examples no demonstrate idea inside the classroom no right answer होची option B facilitate students learning जो माने option B कहउछ correct answer काहे कि B correct answer सेटा हमें बुझिबा ओके तो आमर अछि तीन प्रकार अप्रोच रिगार्डिंग लर्निंग तो आमर तीन प्रकार अप्रोच रही गोटे है कौन ना मन रखि था टीचर सेंट्रिक आ गोटे होछि लर्नर सेंट्रिक आ गोटे होछि आमर कौन ना लर्निंग सेंट्रिक तो ए प्रकार रे हमर मुख्यतः आमे तीन प्रकार जिनस को बुझुचे कि हमर शिक्षण प्रक्रिया रे तीन प्रकार अप्रोच रिगार्डिंग लर्निंग ओके तो ए तीन प्रकार अप्रोच रु आमे जेते बेले सर्वप्रथम हमर जेतु लर्नर सेंटर्ड आसी छी ताले लर्नर सेंटर्ड ऊपर आमे टिके डिस्कशन करिबा तो हमर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बहुत परीक्षा रे आसु छी एथिरे कोन ना एक्टिव रोल को माने प्ले करंदी एक्टिव रोल होछंदी लर्नर तो ये पैसिव किए ना पैसिव होछंती लर्नर सेंट्रिक रे टीचर तो इथे लर्नर माने केमिति लर्न करे थांदी ना बाय यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंस यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर माने कौन करंती ना तांकर प्रायर एक्सपीरियंस तांकर प्रायर एबिलिटी को यूटिलाइज करिकी सीए लर्निंग टा को ग्रहण करि थांदी पूर्व ज्ञान को यूटिलाइज करिकी ताले लर्निंग टा केमिति ग्रहण करि थांदी ना इन ए प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट गोटे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट रे करि थांती केमिति ना बाय लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग से माने निजे करी करी शिखी थांती जानी थांती जानिया पई चेष्टा करी थांती से मानकर प्रायर एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करिकी जहा फल रे कोन ना से माने एठी को हिसाब रे कंसीडर हे थांती ना आज ए नॉलेज कंस्ट्रक्टर आज ए नॉलेज कंस्ट्रक्टर से माने निजे एक्टिवली रही कि निजे नॉलेज कंस्ट्रक्टर हे थांती नॉलेज कंस्ट्रक्टर केमिति हे थांती ना से माने तांकर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को यूटिलाइज करि थांती से माने तांकर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को यूटिलाइज करि थांती ताहाले यार पॉजिटिवनेस कोन ताहाले हम जदी एते जिंस सिखिले कोन ना गोटे लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे एक्टिव रोल लर्नर माने प्ले करि थांती टीचर आज ए पैसिव रोल प्ले करि थांती एवं कोन ना तापरे होउछि कि लर्न टे देखु था ओइटा गोटे मिनिट
तो से जिनस कहला पिला माने कौन ना जेहेतु टीचर पैसिव रोल प्ले करती पिला माने एठी लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे पढ़ंती लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे पढ़िले कौन हुए ना पिला माने बाय यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंस पूर्व ज्ञान को यूटिलाइज करके से माने पाठ पढ़ी थांती ओके। तो इथरे कौन हुए ना यार पॉजिटिवनेस कौन ना यार बहुत गुड़ाई पॉजिटिवनेस अछि लॉन्ग टर्म रिटेंशन लॉन्ग टर्म रिटेन करके रखी थांती रिटेन करके रखी थांती तापर आउ कोन हुए पिला मानकर कम्युनिकेशन स्किल बढ़े पिला मानकर वे ऑफ एक्सप्रेशन बढ़े पिला मानकर इंटरेस्ट आउ क्यूरियोसिटी डेवलप हुए कौन ना इंटरेस्ट आउ क्यूरियोसिटी डेवलप हुए इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी डेवलप हुए ओके से माने एक्टिव रही थांती आउ लर्निंग टा इफेक्टिव हे पारे कौन ना इफेक्टिव लर्निंग टा सब बेले इफेक्टिव रुहे जदि एते सारा पॉजिटिव जिंस कहिले आउ कहिले एटा होउची गोटे लर्नर सेंट्रिक मेथड ताले टीचर पैसिव हिसाब रे कोन करथाय पैसिव माने पूरा न्यूट्रल रही जाए कि सेमिति किछि अछि कि ना ताले टीचर कोन करिथांती ना टीचर वर्क करिथांती एज ए फैसिलिटेटर गाइड किंबा फैसिलिटेटर हिसाब रे तो एठी टीचर रोल कोन अछि पचारि छि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ए टीचर शुड जदे गोटे लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे टीचर कोन करि थांती ना फैसिलिटेटर एवं गाइड हिसाब रे काम करि थांती ताले एठी टीचर रोल कोन ना वर्क एज ए फैसिलिटेटर बुझी हला। मैम थ्योरी पढ़ान तो क्वेश्चंस पर पढ़ेबे थ्योरी पाई हमर क्रिटिकल एसिस हमर पेड क्लास अछि से तुमको थ्योरी पढ़ियार अछि तमे पेड क्लास रे एनरोल करो काहे ना सब क्लास रे मुझे जले क्वेश्चंस पढ़ाए मु मोस्ट ऑफ द थ्योरी कहि देई थाए जो पिला माने रेगुलर क्लास करूछंती से माने जानि छंती। नेक्स्ट आसला कोन ना टीचर सेंट्रिक रे कोन ना टीचर रहउछंती एक्टिव रोल प्ले करंती लर्नर माने पैसिव थांती टीचर कौन करंती ना निज मूड हिसाब रे लेसन प्लान प्रिपेयर करबा किछि भी जिंस करबा से जिंसटा प्ले करंती बेसिकली टीचर सेंटर लर्निंग टारे से केमिति पढ़ाई थांती ना हमें जानि छे हमर परीक्षा रे पढुछि लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लेक्चर मेथड एवं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जमते कि कोनोसी एग्जांपल देके किछि गोटे पढेबा सेही जिंसटा टीचर फॉलो करंती टीचर सेंटर्ड मेथड रे तो जेमिति कि मु जदि तुम मानन किछि न पचारिली तुम मानन को इंटरैक्ट न कली केवल क्वेश्चन पढिबे एबीसीडी कहि कहि देई जिवि ताले तुमको केबे भी पढिबा को इच्छा हबो नाही तुमे माने पैसिव लर्नर हे जिवो किछि बुझो बा न बुझो मुंडटा को हले चलीबा किछि बुझी पारिबो नाही एंड एटा कोन ना टीचर सेंटर मेथड होची गोटे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग मने रखिथिबो इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड इट इज एग्जाम ओरिएंटेड एंड इट फोकस ऑन व्हाट ना रोट मेमोराइजेशन ये केवल घोषा बलद करबा पई पिला माननकु लक्ष्य रखिथिला ये फोकस करूथिला रोट मेमोराइजेशन को ओके। In a learner-centric approach, a teacher should facilitator of student learning and teacher-centric method a teacher active, learner passive. से lecture method एवं कौन ना demonstration method माध्यम रे पढ़े थांती. It is a traditional method of teaching and it is exam oriented which focus on rote memorization among learners. Clear everyone? Then आसिला ताहाले मैम आपन कहिथिले गोटे learning centric method. Learning centered कौन ना लर्निंग सेंटर रे हमें बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स मानन को इक्वल चांस दे थाउ के लर्नर माने निजे कोन करिवे ना निजरा लर्निंग प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करिवे एवं टीचर से जगह रे आज ए फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करिवे ओके। एंड पिला माने आपण समस्त को गोटे इन्फॉर्मेशन मु दबा पई चाहे जेतु बहुत छुआ अछंती हमर गोटे ग्रुप है जे व्हाट्सएप ग्रुप आपनकर ए जो OSSTET एग्जाम पाई आपण मानको हेल्पफुल हबो कि सीडीपी बाय सुनीता मैम टेलीग्राम चैनल को समस्त तो टेलीग्राम थिबे तो टेलीग्राम चैनल थिबो सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 टेलीग्राम चैनल अछि तो से टेलीग्राम चैनल को समस्त फॉलो कर देबे सेही थिरे मोर कांटेक्ट नंबर अछि किबा आजर क्लास सरला परे म आउथरे देई देबी आपण माने सेही थ्रू मते टेक्स्ट कर देले ग्रुप लिंक पाई जेबे आ ग्रुप रे जॉइन हे जेबे
फॉर बेटर लर्निंग जदि कहीं जानी नथिबे कि क्लास को टाइमिंग रे होची को टीचर को क्लास कौन होची आपन को जदि से ग्रुप रे फिजिक्स रो किछि क्वेश्चन डाउट अछि हिस्ट्री पॉलिटी आपन सब टीचर को डायरेक्टली पचारि कि निजरा डाउट क्लियर करि परिबे 1 to 1 ओके तो से ग्रुप टा आपन मानु हेल्पफुल हबा आपन टेलीग्राम चैनल फॉलो करि देबे सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 ओडिया तो सेहि थ्रू आपन पाई जिबे मोरो कांटेक्ट डिटेल्स नेक्स्ट जिबा हु वाज द फर्स्ट टू यूज मल्टीपल चॉइस आइटम्स फॉर असेसमेंट इन 1915 जे पियाजेट भाइगर्स्की स्किनर ना एफजे केली वेरी गुड नेक्स्ट जिबा हमें ना थॉर्नडाइक्स व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज को लॉ टा करी थे लॉ ऑफ यूज और डिसयूज को I will send you an मैम SMS करी थी ओके जी SMS करिछो मॉडर्न करी देबी वेरी गुड ऑप्शन सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज तो थॉर्नडाइक कोन करथिले ना किछिटा देइथिले प्राइमरी लॉ आगु गोटे देइथिले कोन तांकर अछि प्राइमरी लॉ आउ अछि सेकेंडरी लॉ प्राइमरी आउ सेकेंडरी लॉ विषय मध्ये एग्जाम रे आसी जाउची तुमरा जनवरी मासरे हेथिबा OSSTET एग्जाम विषय रे प्राइमरी लॉ केउटे नुहे सेडा आसीथिला तो तुम मानकु कोन जानिबार अछि प्राइमरी लॉ को गुडाक सेकेंडरी लॉ को गुडाक सो दैट तुमे डिफरेंशिएटेड करि परिबो तो प्राइमरी लॉ रे हमर कोन जाउछि ना लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज अंडर ए लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज जाउछि ओके तो ए जिनसडा मन रखथिबा प्राइमरी लॉ तीनटा लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज जाउछि आहुरी 5 रु 7 टी तांकर सेकेंडरी लॉज अछि okay next asila from the following list of methods of teaching identify those which are learner centered ei bhitru jo guda ka learner centered sei guda ka hi identify karibo okay so learner centered identify those which are learner centered IV and V I टे के ओटे कहलानी I प्रोजेक्ट वर्क ओके प्रोजेक्ट वर्क लर्नर सेंटर्ड वेरी गुड I जीव जे देखिछंती बहुत समस्त बी कहउछंती ओके प्रोजेक्ट वर्क ता जीवनी लर्नर सेंटर्ड हाउ लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग आइडेंटिफाई दोज आर लर्नर सेंटर्ड I हबो नाही कोडा हबो भूल अछि सेटा कहली तो एठी तमरो जोटा एई ऑप्शन टा हबो नाही एठी तमरो आई रहिबा कथा IV और V तमरो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन सिमुलेशन क्वेश्चन एंड रोल प्लेइंग ठीक अछि ता सहित प्रोजेक्ट वर्क मध्ये हबो I चॉक एंड टॉक लेक्चर मेथड लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल एटा मध्ये आसी जिवो कोन ना लेक्चरिंग आसिला बोले हबोनी V रे आईटा आड हबो ओके out of option which of the following is a characteristics of critical pedagogy रो जनक किए पिला माने ना language and power democracy and social justice the neutrality of knowledge all of this which of the following is a characteristics of critical pedagogy समस्ते जो माने भी क्लास देखु छंती सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 ओडिया चैनल टी को फॉलो करि देबे
सो दैट कौन से आपण मैंने मोर कंटाक्ट पाई जिवे एवं आपण मान मते टेक्स्ट करदेले मु आपण को सीडीपी जोटा ग्रुप अच्छी आमर टार्गेट बैच ओएसटीटी 2026 से ऐड ऑन कर देबी अपकमिंग कोन सी क्लासेस किमा कोन सी पढ़ारे हेल्पफुल हेई परिबो वेरी गुड ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट आसला ए प्रोग्रेसिव टीचिंग फिलोसॉफी दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू एग्जामाइन पावर स्ट्रक्चर and pattern of inequality within the status quo was proved forwarded by Socrates, Paul Freire, Swami Vivekanand ना रविंद्रनाथ टैगोर कहा द्वारा okay very good Paulo Freire then asla who proposed that all children have language acquisition device Piaget Chomsky Vygotsky ना Dan Solvin एई भलिया क्वेश्चन आसले बोधे हमें तातक थैया करी कि आंसर दबु ना very very nice very interesting lollipop वाला क्वेश्चन ओके यदि क्लास टी भल लगुछि समस्ते लाइक करि देबो प्रत्येक दिन तुमरो रविवार को छाड़ी कि एवरीडे 12 pm रे तुमरो कोन हुए ना तुमरो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास हुए तो तुमे माने देखि पारिबो तुमे मोर टेलीग्राम चैनल रे लिंक हे पारिबो फॉर अपकमिंग फैसिलिटीज सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 एंड हमर गोटे टारगेट बैच हे छि ओएसटीटी रो तो सेइथरे मध्ये तुमे माने जॉइन हे पारिबो सेइथरे मोर कांटेक्ट नंबर अछि तुमे माने टेक्स्ट कले मु सेइथरे तुमको ऐड ऑन करि देबी ओके वेरी गुड चम्मू भाईना ओके नेक्स्ट असला क्रिएटिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल डिस्कवर प्रिंसिपल एंड कांसेप्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल मैकेनिकल रिप्रोडक्शन कोटा हबो मु नेक्स्ट जिबिनी चंदन स्ट्राइक को आसे बदले एठी कोन करूची यस नेक्स्ट आसी गलानी नेक्स्ट आंसर दियो वेरी गुड डिस्कवर प्रिंसिपल एंड कांसेप्ट कोन से प्रिंसिपल बा कांसेप्ट को डिस्कवर करिबा नेक्स्ट आसला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रैबेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स स्टैनफोर्ड बिनेट ना जाल्टन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस ना नन ऑफ दिस कोटा हबो जल्दी आंसर दियो Very good. Stanford Binet test. Next, which of the following statement is not related to assessment as learning? Encouraging students to take responsibility for their own learning. Okay. Then gonna use to assess the learning weakness of the student. Encourages peer assessment. None of the above. Code haba. Encourage students to take not related to assessment as learning. Encourage students to take responsibility of their own learning. Use to assess the learning weakness of the student. Encourage peer assessment. तो एटा होची correct answer option B. Okay, very good. बहुत बढ़िया. Next में which of the following is not true in the context of teaching learning materials? तो हमर जो syllabus रे अछि teaching learning materials ए भितरु कोउटा teaching learning materials regarding true नुहे. Okay. The option A blackboard can be used for putting the cutouts of newspaper and magazines. Okay, teaching can be effective through the use of audiovisual aids. Audiovisual aids help comprehend difficult or monotonous content. Textbooks are one of the main TLM used in classroom. कोटा अब
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के समस्त लिखि दियो समस्त टिके सेशन टिको शेयर कर पिला माने The right answer होची ऑप्शन ए which of the following is not true in the context of teaching learning materials. The teaching can be effective through the use of audio visual aids. ठीक अछि audio visual aids helps comprehend difficult or monotonous contents. जो monotonous concept बा difficult concept जो गुडा अछि ताको easily बुझिबा हमको helpful हुए. Textbook are one of the main TLM used. एटा काहे की हबनी तमने जो समस्त डी लेखिला मते को काहे की हब नाही आमे कोन टेक्स्ट बुक जदी खाली टीचर पढौछंती ताले कोन लेक्चर मेथड जेमति कि मु कहि परिबे एमति एटा धइली एटा जदी मोर टेक्स्ट बुक हेला म एटा देखि कि जदी रामचंद्र आसीथिले एया कले सेया कले एठा को गले पुणी एठु आसीले ओ पिले सरीला थोई देली ताहाले कोन हम जदी आमे सेमिति करूचे सेटा होउची गोटे ट्रेडिशनल मेथड लेक्चर मेथड टीचर सेंटर मेथड ओके तो सही जिनसटा से देला कि टेक्स्ट बुक आर वन ऑफ द मेन टीएलएम यूज इन क्लासरूम भूल कोन से जिनस नाही काहे कि ना जत्ते बेले तुमे माने लेसन प्लान प्रिपेयर करो कॉन्टेक्स्ट पई डी राइट अछि ओके तो गोटे जिनस होची तमे माने जत्ते बेले भी क्लासरूम रे लेसन प्लान बनौछो लेसन प्लान बनेबा समय रे तुमे कोन लेखो ना राइट रे जो कଳାपଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଥିରେ गोटे पुस्तक बोली गोटे गोटे जगह रे मध्ये एक्सेप्टेबल थाए काहे कि ना श्रेणी कक्ष रे जते बेले पढौचे सबु ठारू आमर महत्वपूर्ण कार्य रहूची कोन ना आमर रहूची आमे बहीटी को पाखरे रखि थाउ बही बादे बही रे जो अभ्यास कार्य देछि जेमिति कि आमर देछि चाप जदी साइंस रे आमे चाप पढौचे ताले आमे चापटी को बुझेबा पई पिलां को किछि एग्जांपल देबा पई टीएलएम यूज करि थाउ आम बही रे जदि ग्लोव कथा देछि कि अक्षांश द्राविका कथा देछि आमे बहीटी धइले तो प्रथमे हमर मेन टीएलएम होछि बुक आमे बुक रु देखिले कि बुक रे चित्र दिया है जे एटा होछि अक्षांश एटा होछि द्राघिमा तो आमे छुआ को बुझाइले देन नेक्स्ट होछि ऑप्शन न हबार कारण से कहला ए ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड फॉर पुटिंग द कटआउट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स तो आमर ब्लैक बोर्ड केबे भी कटआउट्स बा मैगजीन लगाया पई हुए न थाए आमर सब बेले श्रेणी कक्षर बाहर गोटे मैगजीन बोर्ड लगा जाई थाए जो मैगजीन बोर्ड रे हमें कटआउट किंबा मैगजीन्स गुडा को पेस्ट करि थाउ ओके नेक्स्ट असला कोन ना द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर दैट ऑफ द टेस्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी ना यूजेबिलिटी कोन हबो राइट आंसर होची वैलिडिटी व्हाट वी ऑट टू मेजर व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर ताले होची वैलिडिटी रिलायबिलिटी माने होची कंसिस्टेंसी ओके ऑब्जेक्टिविटी माने होची नो बायस जोथरे हमको बायस कम देखा जाय यूजेबिलिटी माने प्रैक्टिकेबल एंड समस्तंग पई इकोनॉमिकली यूजफुल हेई थेबो ओके तो ए चारिटा को होची गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स गुड टेस्ट रो कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स होची ए चारिटा जाको then asila kono the statement in a multiple choice type item is known as STEM disaster response question गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने जो स्टेटमेंट गुडा रहुछि से गुडा कोन स्टेम ना डिस्ट्रक्टर ना रेस्पॉन्स ना क्वेश्चन सोलह नंबर बी ओके 16 नंबर ए भाभी की कहो 16 नंबर कौन हबो डिस्ट्रक्टर कहा को कुआ जाए आउ कहा को कौन कुआ जाए तो राइट आंसर होची कौन ना ऑप्शन ए स्टेम
तो ये पिला माने ऑप्शन ए स्टेम काहे की हबो कोन पई डिस्ट्रैक्टर हबनी ना से देइची द स्टेटमेंट इन ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी चारिटा स्टेटमेंट देई थाए ए चारिटा स्टेटमेंट को हमें कोन कह दो जो स्टेटमेंट गुडा रहिला स्टेम आ डिस्ट्रैक्टर तमे काहा को कहि था ना ए भीतर गोटे भूल उत्तर थाए तो ये चारिटा को स्टेटमेंट भितर गोटे भूल उत्तर थाए तो जो भूल उत्तरटी थाए आमे ताको डिस्ट्रैक्टर कहू आमे सब स्टेटमेंट को डिस्ट्रैक्टर कहू न थाऊ ओके रॉन्ग ऑप्शन जोटा थाए सेही जिंसटा जोटा भूल सेटा को आमे डिस्ट्रैक्टर कहू किंतु स्टेटमेंट हैला कोन ना स्टेम ओके स्टेम एंड डिस्ट्रैक्टर नेक्स्ट आसला व्हिच इज द पीरियड फॉर एक्वायरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ social subordination to authority figures outside the family infancy early childhood later childhood na adolescence कोटा हबो पिले जल्दी जल्दी आंसर दिया कौन ओके कोटा हबो सी लेटर चाइल्डहुड ठीक अछि नेक्स्ट बा कोन हु इज ऑथर ऑफ एनिमल लर्निंग पब्लिश्ड इन 1898 1898 मसिया रे एनिमल लर्निंग रा ऑथर के एडोलेसेंस लेटर चाइल्डहुड कोटा एटा तमे देखि कहबा जल्दी कुआ who is the author of animal learning एटा देखि कहबा समस्ते नेक्स्ट आसला तो इंटेलिजेंस दैट इज ऑक्युपाइड विथ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कंक्रीट इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस नन ऑफ दिस एटा गोटे क्वेश्चन आसला एटा कोन आछि ना थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नु एटा होछि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अछि कंक्रीट अछि सोशल अछि तीन प्रकार इंटेलिजेंस टाइप अछि तो सही भितर द इंटेलिजेंस दैट इज ऑक्युपाइड विथ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स इज कॉल्ड कंक्रीट इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस कोटा हबो वेरी गुड कंक्रीट इंटेलिजेंस राइट आंसर होछि ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट है TLM should be selected according to their availability in respective areas the objective of teaching their cost none of the above जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टाकू आमे श्रेणी कक्षा रे व्यवहार करू छे सेटा को हिसाब रे हमर व्यवहृत होई थाए ना देयर अवेलेबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देयर कॉस्ट नन ऑफ द अबव राइट आंसर होची कोन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आमे जे कोनोसी भी विषय वस्तु पढौचे प्रत्येकर ऑब्जेक्टिव भिन्न भिन्न थाए एवं भिन्न ऑब्जेक्टिव लागि आमे भिन्न भिन्न प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करू तेनु जो हिसाब रे हम ऑब्जेक्टिव थाए सेही ऑब्जेक्टिव टिकु फुलफिल करिया पई आमे एम्ति करू देन आसीला द इवैल्यूएशन इन व्हिच वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर scholastic and non scholastic areas of the pupils in known as continuous evaluation placement evaluation comprehensive evaluation diagnostic evaluation कोटा हबो पिले वेरी गुड राइट आंसर है स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक को कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ही मेजर करी थाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रुब्रिक्स रुब्रिक्स रा ए भितरो कोटा एडवांटेजेस नु है पोटेंशियल टू बी ट्रांसफर्ड इनटू ग्रेड्स provides the child more control of their own learning process it restricts the students mind power narrows the gap between instruction and assessment कोटा अब
Which of the following statement is not an advantages of rubrics? से पचारिला नॉट एडवांटेजेस कोटा एडवांटेजेस नुह तो राइट आंसर होची इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्टूडेंट्स माइंड पावर नेक्स्ट आसला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स हमर विभिन्न प्रकार मैनेजमेंट रे ह्यूमन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अछि तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स व्हाट ना a method which an organization collects maintain and reports information the people and jobs. The process of integrating the employees' need and aspiration with organizational needs. The process of bringing people and organization together so that the goals of each are achieved. The efforts to make life worth living for workers. कोटा आबा पिला माने Very good. Option B, the process of integrating the employees' need and aspiration with organizational needs. आम ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स सहित आम एम्प्लॉई नीड्स को मध्य फोकस करी थाउ ओके नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ मेजरिंग रिटेंशन मेथड ऑफ रिकॉल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ रीलर्निंग मेथड ऑफ रिकॉग्निशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ मेजरिंग रिटेंशन कोटा अब 24 नंबर ना method of construction. Next asla according to Johnson and Solomon, stammering is mainly due to learning faulty ways of speech by imitation of other, heredity, emotional tension as observed in excessive fear, lack of balance among the two hemisphere of the brain. समस्ते यार आंसर दबो एटा तुम पई टैक्स रहिला आजिर क्वेश्चन एतिकी ही थिला पिला माने तो मु एई टेलीग्राम चैनल कथा कहउथली जो माने एबे देखुछंदी किंबा परे ए सेशन टी को देखिबे एई टेलीग्राम चैनल टी होछि मोर सीडीपी बाय सुनीता मैम आडा 24/7 तो एई टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर देबे स्कैन करे कि हो किंबा सर्च करे कि हो सो दैट आपण सब किछि अपडेटेड मटेरियल ता सहित क्लास रिलेटेड सपोर्ट ता सहित हमर गोटिए व्हाट्सएप ग्रुप अछि सेइथरे मध्ये मोर नंबर अछि आपण माने पाई परिबे मते टेक्स्ट कले मु टारगेट बैच ओएसटीटी रे आपण मानकु जॉइन करे देबी फॉर बेटर प्रिपरेशन थैंक यू सो मच एवरीवन देखा होबा मंडे दिन ठीक 12 pm रे थैंक यू एवरीवन।